We're also now getting some other breaking details also now coming in, and this is an incident that is now coming in from Mewat, we are understanding, where a DSP was run over by a dumper. Hand of illegal mining mafia is what initial reports are now suggesting. So a shocker there being reported from Mewat in Haryana is what we're understanding. Let's try and get more details. I believe my colleague Anshul is now joining us. So Anshul, talk to us about where this actually happened and what is currently the angle that is being worked with. So yes, this incident happened in a small village of Pachgaon near New, where this incident has happened. And as the DCP, this was his last year as the DCP, and he went there for a surprise inspection at a site where it was being said that illegal mining was happening. And as soon as he reached the site with his team, it is being said that the land mafia then just ran the dumper over him. Now remember, this dumper was the same dumper that was being used to take the sand from that location and then smuggle it to elsewhere. So as of now, there has been no arrest that has been made as of now in this whole case. The DSP has died on the spot is what we are picking up as of now, and it is also being said that he went there for a surprise inspection, and as soon as the mafia saw the DSP coming at the location with a team of police officials, they immediately went ahead with the dumper and ran the dumper over the DSP is what we are being told. Till now, no arrests have been made in this case, but it is being said that this is the biggest ever action that has been taken by the Haryana land mafia against a police official. However, what the police is officially telling us as of now is that they have started the investigation into this. They have the details of the people who are involved, and in the next few minutes we might also get the reports of all these people being arrested by the Haryana police. But as of now, it has been approximately 2 hours since this incident has happened, and no arrest has been made as of now. Anshul, I'll just request you to stay on with us. Our colleague Kashim Khan is also now joining us on the phone line, and I believe he's actually joining us from Mewat. Kashim, क्या आप बता सकते हैं ये घटना कब हुई और पुलिस का क्या कहना है? क्या उनके पास कोई लीड्स हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं? कब तक कोई अरेस्ट हो सकता है? देखिए, कुछ देर पहले की घटना है, तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले की घटना बताई जा रही है। ताउरू क्षेत्र का ये मामला है। पचगांव गांव के समीप ये हादसा हुआ है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने गनमैन और चालक के साथ उनको सूचना मिली थी कि कुछ ओवरलोड डंपर यहाँ से गुजरते हैं जो अवैध खनन के कार्यों को अंजाम देते हैं। उनकी जांच के लिए वो गए थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे और अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे, तो उसी दौरान एक डंपर ने सीधी उनको टक्कर मारी है। डीएसपी की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नूह के लिए भिजवा दिया गया है। एसपी वरुण सिंगला घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। एडीजीपी साउथ रेंज एम रवि किरण भी वहां घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। डंपर चालक डंपर की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस की बहुत सारी टीमें अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और अवैध खनन का और जो डंपर माफिया का ये खेल है, ये कोई नया नहीं है। पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में खनन माफिया सक्रिय रहा है और कई बार इस धंधे में पुलिस पर भी सवाल उठते रहे हैं कि पुलिस इस धंधे से मोटी कमाई करती है। इससे पहले भी कई जवानों की जान जा चुकी है, लेकिन इतने बड़े स्तर के अधिकारी की पहली बार एक डंपर की वजह से जान गई है, जो सीधी टक्कर मारी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें बड़ी चूक रही है, क्योंकि ये नया धंधा नहीं है। पिछले कई दशक से लगातार ये धंधा यहाँ फल फूल रहा है। काशिम, जैसे आपने कहा, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई नया नहीं था, तो पुलिस की तरफ से भी कुछ चूक हुई है। अभी ऑफिशियल्स कितने और कौन से ऑफिशियल्स ग्राउंड पर हैं? देखिए, जहां तक बात करें तो यहाँ डीएसपी के गनमैन और चालक ने डंपर को और गाड़ी को देखा था और उन्हीं से पूछताछ के आधार पर आला अधिकारी अब टीमों का गठन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके, डंपर को कब्जे में लिया जा सके। जहां तक डंपर और खनन का सवाल है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ से पुलिस विभाग को, राजस्व विभाग को राजस्व आता रहा है। सैकड़ों की तादाद में रोजाना यहाँ ओवरलोड डंपर फर्राटा भरते हैं। ये न केवल पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए घातक हैं, इलाके के सैकड़ों लोगों की जान भी ये डंपर ले चुके हैं। बार बार ये सवाल उठते रहे हैं। लोगों ने भी कई बार यहाँ इनको लेकर के जाम लगाया है और मांग की है कि ओवरलोड डंपरों पर, अवैध खनन पर लगाम लगाई जाए, लेकिन पूरी सख्ती के साथ इन पर आज तक भी लगाम नहीं लग पाई है। यही वजह है कि आज एक डीएसपी स्तर के अधिकारी की मौत हो चुकी है। काशिम, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ। जैसे आप बोल रहे थे कि पुलिस काफी कॉन्फिडेंट है कि कुछ समय में एक आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा और अरेस्ट भी हो पाएंगे, डंपर की क्या कोई आइडेंटिफिकेशन हो पाई है अभी तक?
बिल्कुल, डंपर की आइडेंटिफिकेशन जो दो अधिकारी के साथ जो दो कर्मचारी थे, गनमैन और चालक, उन्होंने कुछ हद तक कर ली है। उसी के आधार पर आला अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। टीमों का गठन कर दिया गया है जो चारों तरफ इलाके में सर्च अभियान कर रही हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द डंपर चालक और डंपर पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो आपने जैसे बताया जो ये डीएसपी थे सुरेंद्र सिंह, उनकी तो मौके पर ही हत्या हो गई थी। उनका शव अब कहाँ लिया गया है, कहाँ ले जाया गया है, क्या उनके परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, डीएसपी के शव को जिला मुख्यालय नुहू सीएचसी में लाया जा गया है, जहां उनकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन एसपी वरुण सिंगला वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। उनका पहला प्रयास यही है कि जल्द से जल्द डंपर को और डंपर चालक को पकड़ा जाए, ताकि तेजी से इस दिशा में कार्रवाई की जाए और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए कि आखिर ये जानबूझकर हुई है हत्या या फिर एक हादसा है। तो कुल मिलाकर पुलिस अभी इस दिशा में कुछ भी कहने से साफ साफ बचती दिख रही है। आला अधिकारी कुछ देर बाद ऑफिशियल बयान इस मामले में देंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। काशिम, दो तीन चीजें मैं और समझना चाहती हूँ। पहले मैं ये समझना चाहती हूँ, जो ये डीएसपी थे सुरेंद्र सिंह, ये इस एरिया में कितने समय से काम कर रहे थे? डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू इलाके में पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए थे और लगातार वाहनों की चेकिंग की बात हो या अवैध खनन की बात हो तो कार्रवाई करते रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने बाद वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। 4 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी और उससे पहले ही अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक डंपर की वजह से उनकी जान जा चुकी है। परिवार में गम का माहौल है। बताया यही जा रहा है कि इससे पहले सुरेंद्र कुमार वीएलडीए के पद पर पशुपालन विभाग में कार्यरत थे और कुछ साल पहले डीएसपी बने थे और तावड़ू में पिछले 1-1.5 साल से ये कार्यरत थे। तावड़ू इलाका मेवात जिले का थोड़ा सा हाईटेक इलाका माना जाता है। यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का गुड़गांव का जो जिला का हिस्सा है वो लगता है। तो काफी लंबे समय से डीएसपी सुरेंद्र यहाँ पर थे और लगातार इस तरह की गतिविधियों को रोकने में उनका जो काम है वो लगातार जारी रहता था और लगातार वो जांच और कार्रवाई ओवरलोड डंपरों के खिलाफ करते रहते थे। आज उसी ओवरलोड डंपर की वजह से वो इस दुनिया में नहीं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि काफी काम वो कर चुके थे इलीगल माइनिंग माफिया के एक क्रैकडाउन में, ऐसे क्या कुछ डिसीजंस थे जो उन्होंने लिए थे कुछ पास्ट में? देखिए, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं खनन माफिया जो है वो ओवरलोड चला करके या अवैध खनन को अंजाम दे करके मोटी कमाई करता है। पुलिस की और आरटीआई विभाग के साथ साथ माइनिंग विभाग की अब थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से जो डंपर माफिया हैं वो जलाए हुए थे और शायद कहीं ना कहीं उसी जलाहट का परिणाम है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि कई बार जब चालान किए जाते थे तो आरटीआई विभाग और पुलिस विभाग लाखों रुपए का चालान कर देता था और कई कई महीने उन वाहनों को इम्पाउंड कर देता था। तो कहीं ना कहीं जो डंपर मालिक हैं उनका जो व्यवसाय है वो घाटे में जा रहा था। तो इसी वजह से शायद डीएसपी के साथ ही इतना हादसा हुआ है। चीज और समझना चाहती हूँ, former DGP Shashikant, I believe former DGP of Punjab, Shashikant is also now joining us on the broadcast. Good to have you on the broadcast with us. How do you read these developments? A cop who was just doing his job now being mowed down by a dumper, but the police is confident that some sort of identification has been done, but it still raises a lot of questions. This is an issue that actually has been plaguing the state for a very, very long time. Shouldn't there have been a better vigil? Yeah. Look, unfortunately, what has been happening all over the country in different states. In different states, there are typical mafias as per the local conditions, local raw materials, etc. You'll find road mafia. You know, one bright engineer was killed in Bihar some time back. The stand mafia, you're trying to do that. An IPS officer of UP, an attempt was made on her also. I think the lady's name is Durga or something. It's indeed a sad state of affairs that these mafias or these gangsters, somehow or the other, they're not coming under control. And why they're not coming under control? Obviously, they have some patronage from some circles, some powerful circles which really matter a lot, which have their own importance. In fact, I'll say that the rule of mafia in different states, whether it's drugs, whether it is your timber, whether it is sand, and whether it is everything of education, there's not one field, unfortunately, where we don't have a mafia. All this mafia, I think CBI needs to go into these things, get length and crush them, and not only crush them, but even their protectors need to be brought to the books and action taken against them.
Sir, I'll just request you to stay on with us. We also have the former DGP of Uttar Pradesh, Arvind Jain, and we also have from the BJP, Raman Malik also now joining us. Raman Malik, let me take your first reaction. Such unfortunate news coming in. Our DSP was about to retire in the next 4 months. Mowed down today, dies on the spot, mowed down by a dumper, and we still have no arrests that have been made so far. I pay my homages to Surendra Singh ji. He was a very good officer. And let me tell you one thing. 4 months is a very long time. Even if it is 4 minutes, our Haryana police officers at any level will give in everything that they have to uphold the law of the land. This is an unfortunate incident which has happened in a very notorious area of Haryana known as Mewat. And it is very well known that there are certain people who are part and parcel of groups which do illegal activity to fund illegal and subversive activities of certain Jamaats. We in Haryana are very clear about it, and I'm saying this on your channel. No stone would be left unturned, not just to apprehend the drivers or the mafia kingpins behind, but also the wider paraphernalia of this group, which makes people do illegal activity, collects money, and uses that money against anti-national activities, and also about forced conversions and other such activities. Okay, I'll just request you to stay on with us. I want to take in a... Sure, go ahead. Let anybody who is involved in this remain peacefully. We are going to take full force of the law and act back at them with a proper vengeance which is under the purview of law. We will not break law, but we will not spare them. We will not spare them is the word coming in. Raman Malik, just give me 30 seconds. Just stay on with us. I want to take in a quick word from Arvind Jain, who's been patiently waiting as well. The question that is being raised at this time is that this is an issue that everybody knows about. So why is it becoming so difficult to crack the nexus? Where are the lapses? It is clear that the sand mafia, land mafia there, they have patronage somewhere. New area has been very notorious for a very, very long time. But it saddens me because BJP government has been there in Haryana for so long. One full tenure of 5 years for Mr. Khattar, and he is running second tenure. Who stops him from taking action? Who stops the police from taking action against anti-social elements living in new area and operating from new area? There are terrorist activities going on from there. Cow slaughtering is going on. I have so many gangs are working from new area. They come to UP area also to hijack trucks, to hijack trawlers. So area is very well known for criminal activities. So why action is not taken? If paramilitary forces are required, why is action not being taken, Raman Malik? Why are we waiting for an unfortunate case to take place and then giving assurances? I don't know whether Mr. Jain is well aware or not. I am not aware of the intellect on the particular subject of Mr. Jain. But let me tell you something very clearly, Mr. Jain. In the last 24 months, the kind of action that has been taken against illegal mining of various sorts in Haryana have been a subject of discussion in various governmental and administrative forums. Not just that, we have broken the back, and this is a frustrated which was planned in nature. I am again reiterating, this was a planned attack on the DSP, and we will take full action against these people. And you are saying for the one tenure, the kind of mining mafia that used to be existing pre-2014 cannot be compared today, because the kind of patronage that was available pre-2014 is not
people into illegal mining cannot also comprehend that they will ever get No, but that today kind a lot of questions are support. being asked, and rightly so, sir, for the state government, that if this was an issue that is well understood by all, what were we waiting for? Why did we wait for an unfortunate case to take place and then offer some sort of an assurance? Every now and then, across Haryana, every now and then, we conduct raids, we apprehend machinery, we apprehend trucks, dumpers, people who are into illegal mining of any sort, whether it is stone or sand or others. Now, when such things happen, it breaks the backbone of the people who are into the business. And when they get frustrated, they do acts. Most of the acts, we are able to safeguard our man, machine, and people. But unfortunate incidents do happen, and those are regretful. Our condolences with the family, but at the same time, he is part of the administrative family of Haryana, and this government will stand for its people, and especially the people of the administrative family that are there. Mr. Raman Malik, good afternoon. Anusha this side. It's good to hear all the words that you're putting out, especially for the bereaved family. But the question that arises, especially after an incident like this, is that this is not the first time that sand mining or related activities have created a law and order problem in the state of Haryana. If you look at the crime records, and you are a veteran politician, you would know yourself that incidents like this have happened even before. Sand mining mafia or different kind of illegal activities, thriving on the natural resources of the state is a well-known phenomena. There needs to be a systematic crackdown. More importantly, a good investigation in this case, sir. See, we have ample, we have the number of people apprehended, number of fined, the amount